Hello, my name is Amber, and in this podcast, we have an amazing guest, Dr. Amandeep Kaur Sekhon, with us. Get ready for a powerful conversation about research, passion, and how asking the right questions can change everything. This platform was given by GIAR, so I'm very thankful to that platform too. Ma'am, can you introduce yourself? Hello, ma'am. I am Dr. Amandeep Kaur, Assistant Professor at Khalsa College of Education, Amritsar, and I have a 15 year of teaching experience. And I have three masters, that is Masters in Economics, Masters in Punjabi, and Masters in Education. And my area of expertise is the innovative pedagogical approaches, technology, teacher education. So, ma'am, since you are masters in economics, I would like to know कि economics में what is the scope for research? In economics, we can compare the growth and the developmental models of different countries and also about the tertiary sector like banking system of the different countries. And if we talk about India, then we can study about the various innovative techniques that can be used in agriculture sector that may enhance the productivity of agriculture sector, and it may also will be helpful for the farmer so that can they can get rid of their debts, old debts. Okay, ma'am. Ma'am, since you have 15 years of experience, you must have met lots of students. There would have been some students who would have inspired you, or some who would have demotivated you a lot. Can you share some experiences regarding that? Yeah, my there is a my student of a B.Ed M.Ed course, and I will not take her name publicly. Okay, I think it will be okay for you. Yes, So ma'am. she is quite motivating for me because she is very techno savvy, and sometimes if I don't know how to operate a software, so she helped me a lot. So I can assume her role as a mentor in my life. And some students are also there who are very naughty and mischievous, and they do such kind of behavior. There are also some kind of student, but actually, what I find that they are not actually mischievous just because of that I am in the class. Actually, they are sometime I then I start search that why a student behave in such a way, and I found that there is no particular problem with me, my technology, or with my teaching, my technology, or with me. Actually, they have problem with their some issues with their personality or some issues in their family or in their siblings. That's why they become such kind. They don't want to adjust in the Study. classroom. Some students are just like attention seeker and they just want some Some are attention. attention seekers, but sometimes they have some particular personal problems, and sometimes they are unable to cope with that. That's why they are feel depressed or disturbed in the classroom. Ma'am, how would you think that Indian government is approaching towards research? I think more rigorous effort should be made so that because if there is any project launched by a government of India or any research body, the very few are selected, or sometimes those who are selected, sometimes they left the project in between, or those who desire or inspired to be get selected, they didn't get a chance. So I think more transparency should be given, or there should be more transparency when there is allotment of projects, and different kind of projects should be launched by government of India or any other body. Ma'am, there are also some private institutes who do research like GIAR itself. ਹਾਂਜੀ. What would you think ki their perspective is towards research? Their perspective, I think, if we talk about, because it all depends upon the area or stream in which we want to conduct study. So, at present time, AI is the more frequent area, or where can a person can do study. Or if we talk about at the national level or international level, then there is a like war crises are there. There are some sustainability crisis, water crisis, or in these areas there is a scope of to conduct research. What is the scope of research in space? Like the most Astronomy. recent, yes, ma'am. Even the most recent that ISRO conducted about Aditya L1. Hmm.
What would you say about that? Actually, I don't hear about this concept, so I don't have any perspective on it. Okay. Ma'am, since space is a very vast topic, all of us know Mhm. that thing. So, where are the exact aspects जहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप हो जैसे रिसर्च का? Being a teacher educator of social sciences, so I have perspective like psychology, sociology, or economics, political science. These are the area of my expertise. So I can suggest over these areas only. So, ma'am, as a psychologist, like you said, do you Mm. think that students who pursue psychology, they can even give competition to psychiatrists, or even they can prescribe medicines or something? Actually, nowadays, a number of students got admitted in psychology courses. The main reason that due to stress, work culture stress, and due to to get high percentage in examinations or to clear NEET and NET and UGC and CTET, PTET, there are so many competitive examinations. Yes, Every ma'am. student, every individual go through particular mental stress. Mental stress is nowadays, becoming a very common phenomena. Yes, आपने सुना ma'am. होगा कि 10th क्लास का बच्चा भी कहता है कि मेरे को स्ट्रेस है. Yes, ma'am. तो एन एज ओल्ड, आई मीन अगर आप 10 साल पहले बात करो तो बच्चे को पता भी नहीं था कि स्ट्रेस नाम की चीज भी होती है इस दुनिया में. क्लियर. Yes, सो ma'am. विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम, मॉडर्नाइजेशन, कॉमन कॉन्सेप्ट है. 5th क्लास का बच्चे को कहता है कि मैं ना डिप्रेशन फील कर रहा हूँ. तो जब हम डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेंटल स्टिग्मा और एंजाइटी की बात करते हैं, आप देखते हो कि 8th या 9th क्लास का बच्चा है तो अगले दिन टेस्ट होता है तो उसको एंजाइटी हो जाती है कि मेरी टेस्ट है. वो रात को पढ़ता रहता है, सुबह भी जल्दी उठ जाता है और सारा टाइम वो टेस्ट की बातें करता रहता है. इट मीन्स कि ही इज एंशियस समवेयर और समवेयर, मीन्स कि अपनी लाइफ में किसी कहीं ना कहीं वो मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहा है. So he or she needs a counseling. There are post of counselor in the schools. There are post of psychiatrists in the schools. So Yes, ma'am. nowadays, if we talk about the research areas, so say but it has been announced that there are only three work areas where which can be there can be a lot of employment. That is being a psychologist or psychiatrist or AI developer or some Yes, coding ma'am. developer. Yes, ma'am. Ma'am, since you said कि technology is more like it is causing a disadvantage more, do you think technology is the somehow reason that students or kids they think that stress or depression are very common? Actually, technology is very useful if we use it ethically and time bound. It doesn't mean कि अगर someone want to search and keep on searching and searching or surfing and spending a lot of hours just on the phone or just on social media. So it should be time bound or it should be properly under the surveillance of some adult if the students are using, or if the adults like we are using. So we should be time bound and we should be disciplined कि लाइक मैंने 2 आवर यूज कर लिया तो मैं थोड़ी ब्रेक लूंगा या ब्रेक लूंगी. तो तभी हम जो है टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप कर सकते हैं. अदरवाइज क्या है कि हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है और हमारी जो ब्रेन है, आप देखते हो कि कम टाइम अगर हम ज्यादा फोन जिसने यूज करते हैं तो हमें इंसोमिया टाइप फीलिंग होती है, नींद नहीं आती रात को. तो Yes, वो ma'am. एक तो हमारी आइज थक जाती है, सेकेंडली हमारा ब्रेन भी थक जाता है बिकॉज देयर इज एन abundant ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट. Because and at that time our mind is unable to process ki what is right, what is wrong, what to select, what not to select, and there is a state of brain rotting or brain confusion that exists in our life. Yes, ma'am. Ma'am, since you also said that you are an expert in sociology, what would you say about research scope over there? No, I am not expert in sociology. Actually, these are the areas of social sciences. And Okay. now, please kindly repeat your question. Ma'am, I wanted to ask about the research scope in sociology. Like if we talk about the social setup of the country or the social setup of the society, it has changed a lot due to the effect of westernization or due to the effect of modernization. Like before, during if we talk about 1980 or 1990s, there is a joint family system, and Yes, now there is no such type of system is there.
even people don't prefer to live with their parents also. Parents are in somewhere else and kids are in somewhere else. And then because there become a culture of sending their kids or their wards to foreign Yes, ma'am. लैंड में है ना भेज देते थे. तो वो भी एक सोशल सोसाइटी को है ना जो माइग्रेशन हुई है दैट आल्सो इफेक्ट्स द सोसाइटी. नाउ देयर इज a crisis in the institution of marriage. पहले मैरिज का प्रॉब्लम थी. देन प्रॉब्लम आ गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट आ गया. चलो वो भी एक्सेप्ट किया सोसाइटी ने. उसके बाद अब मैरिज इंस्टीट्यूशन इफ यू गो थ्रू वेरी सोशल मीडिया देयर इज ऑलवेज अ पोस्ट. तो इट मीन्स कि मैरिज जो है हमारी सोसाइटी में एक तरह की बिल्कुल ही स्नब हो गई है. इधर पीपल डोंट वांट टू प्रेफर टू मैरी और दोज हु मैरी दे आर facing very issues like they have family issues, they have very personal issues. Actually they don't want to share their privacy with someone else, so Yes, privacy ma'am. issues are also there. And also there are economic issues because to run a family life it's very burdensome nowadays due to the increasing rate of inflation. There are so many economic causes. That's why people prefer to live alone than the being married. Ma'am, do you think that this change in the mindset regarding marriages and many more things that you just said, like children going to foreign more, will it impact the future of India? Definitely, it will impact because if you in Japan, there are more senior citizen than the adult one, than Yes, the ma'am. younger one. So it means it will definitely trend in India soon after 20 or 30 years. If people don't marry, then they all will be old people and there will be no kid or children in our country also. Ma'am, but So I right think now India's this trend should be changed. Ma'am, but right now India's population is like on a boom, and India's the most populated country right now. So don't you Hmm. think that for the time being, like for the next 5 or 7 years, maybe this marriage concept in the way it is going on, it should be continued, that it's fine. Actually, this marriage concept, actually, in India, there is a more percentage of people that are below poverty line, or they are at the edge of poverty line, or below middle class families. So the which trend I am talking about, this is not related to a specific group. This is related to a very high income group. So Okay, that's ma'am. why India is a populated country. That's why there is no population control in our country. Ma'am, people who are below poverty line, government is trying to enhance their living standard and uplift them. But somehow those people themselves are not interested in that thing. They do not want to Yeah, work very hard and all. this is entirely true that people don't want to work. Actually, there is no severe unemployment. Actually, there is educated unemployment in our country. Or people want to remain unemployed by voluntarily. They don't prefer to work. So, although government is doing a lot of efforts, lot of schemes have been introduced each and everywhere, but the beneficials or beneficiaries are very few. Because somehow the still the upper caste people, they take more advantage of those They things. take more advantage, and moreover, what I think that the per capita income that has been decided by that is also very low. I think it's about less than 250. So Yes, ma'am. in the era of technology or in the era of such a high inflation rate, 250 rupees means Nothing. what I can say now. Ma'am, even this, I am doing my BTech, so we Hmm. can see that there are many engineers, like civil engineers and mechanical engineers, who are facing severe unemployment. Like it is said that there is no scope for civil or mechanical engineers. So, what would you like to say in that perspective? Actually, during 2000, 2002, there was a very boom period of engineering in our Yes, ma'am. society or in our, and this became a trend in that way कि बच्चे को हम इंजीनियरिंग करवा लेते हैं. अब इतने के ज्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट और कॉलेजेस हो गए हैं कि अब जो जॉब मिलनी है वो बिल्कुल ही बंद हो गई है. देयर इज नो स्कोप ऑफ जॉब. So this is the main reason कि there is more supply than the demand. Demand is nowhere, and people are keep on.
educating our people are keep on doing the BTech courses. So I think there should be a balance between demand and supply, and this should be also a topic of research that in which area there are less students admitted, and in which areas more students are admitted. So their mindset can be changed, their workshop can be organized. So in this way we can change their mindset कि वो अपना जो है area of interest थोड़ा wider करे, ताकि जिस एरिया में बच्चे कम एडमिशन लेते हैं हम उनको उधर एडमिट कर सके, और जहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा है और जॉब्स बहुत कम है तो उधर से शिफ्टिंग हो सके, तो तभी बैलेंस हो सकता है और हर कोई जो है वो अपनी जॉब कर सकता है फिर। मैम बट इन अगर अ मैं कंट्री लाइक टीचर इंडिया। एजुकेशन एरिया की बात करूँ तो पहले बहुत बीएड करना दैट वाज लाइक कि बच्चे ने बीएड कर लिया ना, बहुत इंटेलेक्चुअल है, टीचर बन जाएगा, गवर्नमेंट जॉब मिल यस जाएगी। मैम। बट बिकॉज सप्लाई ज्यादा होगी, गवर्नमेंट जॉब्स की डिमांड कम हो गई, तो अब टीचर एजुकेशन में भी समटाइम्स की जो डिमांड है वो कम है, तो जो सप्लाई, बट उसमें ये है कि अगर गवर्नमेंट एरिया में पोस्टिंग नहीं हो रही तो स्कूल में अगर जॉब करनी है तो बीएड तो होनी ही चाहिए। ठीक है, यस तो मैम। दैट्स वाई कि बच्चे को कभी टीचिंग लाइन में क्राइसिस नहीं फेस करना पड़े। ठीक है, बिकॉज स्कूल टीचर ने तो बीएड करी होनी चाहिए, ये दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, दिस इज द बेसिक एलिजिबिलिटी। सो जो टीचर है ही और शी कैन नेवर फेस क्राइसिस, टीचिंग क्राइसिस। मैम बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे हर चीज के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स है, अगर आप मेडिकल हम्म। चूज करो तो नीट है, नॉन मेडिकल चूज करो तो जेई है, अगर हम्म। आप आर्ट्स में जाके करो तो आपके पास आगे यूपीएससी आ जाता है। एंड ऐसा भी हम्म। नहीं है कि जो ये एग्जाम्स है इनका डिफिकल्टी लेवल मीडियम होता है या लो होता है, वेरी दे आर हाईली वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट। यूपीएससी इज तो आउट ऑफ रेंज फॉर मेनी पीपल। तो मैम उस केस में तो फिर ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट आएगा ही आएगा, इवन इफ द स्टूडेंट इज वेरी स्किल्ड। इट इज नॉट ऑलवेज इम्पोर्टेंट दैट द कि उस एक दिन तुम्हारी किस्मत अच्छी हो और तुम क्लियर कर जाओ। आई मीन हम्म। आई हैव गिवन जेई एंड आई थिंक जेई नीट एंड यूपीएससी थ्री ऑफ देम आर समहाउ बेस्ड ऑन फेट एंड लक। अगर तुम्हारी किस्मत साथ है तो तुम्हारा हम्म। पेपर निकल जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो व्हाट शुड बी डन इन दैट केस? किस्मत भी है बट हार्ड वर्क मैटर्स अ लॉट। हार्ड वर्क भी होता है, ठीक है, हार्ड वर्क के साथ फिर फेट काम करती है। तो जो रह जाता है वो नहीं है कि वो, देखो उसके पास स्किल तो है ना, वो कहीं भी एडजस्ट हो सकता है। फिर ये नहीं है कि अगर आपकी जेई में नहीं हुई या नीट में नहीं हुई, ठीक है, या यूपीएससी में क्लियर नहीं हुआ तो वो फ्री है। वो जो दूसरे टेस्ट हैं, ठीक है, लाइक अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब के जो लोकल टेस्ट होते हैं, जो जैसे पीपीएससी का है, तो वो उधर भी अपना ट्राई कर सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हो, अगर आप फॉरेस्ट सेक्टर में जॉब करना चाहते हो, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हो, टीचिंग सेक्टर में डिपार्टमेंट जॉब करना चाहते हो, किसी भी सेक्टर में जाओगे तो आपको करना पड़ेगा ना, कॉम्पिटिटिव टेस्ट देना पड़ेगा। सो उधर की जो यस मैम। नॉलेज हमने ली हुई है यूपीएससी की या फिर हमने जेई में, तो जो हमारा बेसिक जीके है हम उसको उधर यूज कर सकते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट्स में बहुत ज्यादा पर्सन है कि जिन्होंने यूपीएससी ट्राई किया, बट फिर वो या तो उन्होंने इंडियन सर्विसेज को ज्वाइन किया किसी को, या फिर वो आर्मी में चले गए, ठीक है, या फिर उन्होंने कोई फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, बट वो सारे गवर्नमेंट जॉब पे ही हैं। ठीक है, तो जो बंदा स्किल्ड है, जो नॉलेजेबल है, ही और शी कैन एडजस्ट एनीवेयर। उसके जो पढ़ाई है या जो उसकी स्टडी है, उसकी वैल्यूज हैं, उसकी स्किल्स है, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। ही और शी विल एडजस्ट सूनर और लेटर। मैम पर नीट और जेई जैसे थोड़ा सा प्रेस्टीज इशू बन जाता है कुछ फैमिलीज हम्म। में कि नीट लिया था तो हम एमबीबीएस ही करवाएंगे। हम्म। तो उस केस में कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी तो थोड़ा मेंटल ज्यादा स्ट्रेस, फोर्स कर देते हैं दिस इज ऑल्सो बच्चों ए को। मेंटल स्ट्रेस। आप देखते हो कितनी न्यूज आती है कि बच्चे को फोर्स किया कि नीट क्लियर होना चाहिए था, जेई क्लियर होना चाहिए था, तो बच्चा कोप अप नहीं कर पाया, फिर उसने कोई गलत स्टेप उठा लिया। तो आई थिंक हियर द मेंटल स्टेट ऑफ द चाइल्ड मैटर्स मोर देन द प्रेस्टीज। बिकॉज अगर बच्चे को भी खुश हो जाते तो प्रेस्टीज तो भी नहीं रही। अगर बच्चे हाँ ने कुछ है जी। ना गलत स्टेप ले लिया तो प्रेस्टीज तो फैमिली की वैसे भी नहीं रही। तो इससे अच्छा नहीं है कि हम बच्चे को एक स्मूथ इन्वायरमेंट दें, कि अगर देखो सारे बच्चे, अगर हम अपने हैंड्स की भी बात करें तो 4 और 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, क्लियर। यस तो मैम। देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट, अगर मैंने यूपीएससी नहीं किया, अगर मैं जेई क्लियर नहीं कर पाई तो मेरा बच्चा भी क्लियर करे। अगर वो भी क्लियर नहीं कर पाया तो कोई नहीं, आप उसको किसी और बीएससी में डाल सकते हो, एमएससी करवा सकते हो, बैचलर इतनी कोर्सेज है, बीबीए है, बीएससी है, देन बीटेक है, बीसीए है, देयर आर सो मेनी कोर्सेज। तो हम बच्चे को थोड़ा दे सकते हैं ना, स्कोप दे सकते हैं कि वो
कहीं ना कहीं तो फिर एडजस्ट होगा अगर वो हार्ड वर्क कर रहा है तो मैम आफ्टर फिर 15 इतना years मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बच्चे को, आई व्हाट आई थिंक एज ए टीचर। मैम आफ्टर 15 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस डू यू थिंक कि अगर एक बच्चा अपने मनपसंद फील्ड में है, कि वो जो हम्म। करना चाहता था वो उस फील्ड में है, तो वो डेफिनेटली एक्सेल कर ही जाएगा क्योंकि वो हार्ड वर्क कर रहा होगा और वो इंटरेस्ट से चीजें कर रहा होगा। उसकी अटेंशन भी है, उसका एटीट्यूड भी है, उसका एप्टीट्यूड भी है, और उसका हार्ड वर्क भी उसी फील्ड में है, उसका सारा फोकस उसी फील्ड में है, तो डेफिनेटली ही और शी विल सक्सीड इन द चूजन फील्ड। थैंक यू सो मच मैम, दैट वाज ऑल फॉर थैंक टुडे। यू। थैंक एनी यू। लास्ट ग्रेटफुल वर्ड्स और समथिंग? Actually, being a teacher, I will advise my students that everyone should do efforts to conduct research, to take some projects, or if he or she is not getting some funds or not funding, so that's not a great matter. We can start very little project at our own level. We can show our abilities. We can because during this process, he or she will gain a lot of experience at how to conduct a research. So a person should be research focused and he should have a positive attitude. Only then life will be very easy. And if we feel like कि ये हो गया वो हो गया मेरे से कुछ नहीं होगा, तो फिर मेरे से कभी भी कुछ नहीं होता। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू सो मच।